Good morning, my dear lovely patines. Welcome in science class. Yes, beta, in the previous classes we have started lesson 8, water. And in that classes we have already discussed the topics like water, its importance, its occurrence, water cycle, purification of water, solution and solubility. Okay, now today we are going to discuss the topic impurities and its types. Okay, impurities and its type and how we can remove impurities, how can we remove soluble impurities and insoluble impurities, what are the method that we use to remove soluble impurities from water and insoluble impurities from water. Okay, and we will discuss worksheet 3. Okay, that is on page number 85. So open page number 84 and start reading beta. Okay, now beta, what are the different types of impurities present in natural water? Okay, different types of impurities present in natural water. The impurities present in water can be of two types, insoluble or soluble impurities. Insoluble impurities. Insoluble impurities are the impurities that do not dissolve in water. Okay, the impurities that do not dissolve in water. For example, mud, glass, oil. Okay, mud, glass and oil are the insoluble impurities. Now, next beta, soluble impurities. Soluble impurities are the impurities that can dissolve in water. Okay, like for example, salts and germs. These are soluble impurities. Yes, beta. It is very important to purify the water that we drink. Okay, so to make the water fit for the drinking. So some methods of removing the insoluble impurities present in the water. Okay, insoluble impurities को हमने अगर remove करना है तो there are some methods, like first is sedimentation and decantation. ओके, सो सेडिमेंटेशन क्या है बेटा? इम्प्योर वाटर इज फर्स्ट आपने क्या करना है, इट इज टेकन इन अ कंटेनर. इम्प्योर वाटर को आपने कंटेनर में लेना है. आफ्टर सम टाइम्स द इम्प्योरिटीज लाइक सैंड एंड क्ले सेटल डाउन एट द बॉटम. impurities are settling down at the bottom and this process is known as sedimentation. Okay, impurities जो है नीचे bottom में settle down हो जाएंगे. Now clear water is then transferred into another vessel and this process is called, this method is called decantation. Okay, now the third method is filtration. Filtration में क्या करना है बेटा? It is the process of removing the suspended solid from water by passing it through a filter. Okay, by passing it through a filter. What filtration is considered to be a better method than sedimentation and decantation. Okay, it is better method than sedimentation and decantation. It in a laboratory, filtration is done using a filter paper. ये बेटा फिल्टर पेपर है, इसको कोन की शेप में बना लेते हैं इसको. इट इज पुट इन अ ग्लास फनल. ये ऊपर जो है ना बेटा, ये ग्लास फनल है, इसके अंदर फिल्टर पेपर को हम रखते हैं एंड देन मडी वाटर इज पोर्ड इनटू द फिल्टर पेपर. और जो गंदा पानी होता है, मडी वाटर होता है, इम्प्योर वाटर होता है, उसको फिल्टर पेपर में पोर किया जाता है. ठीक है, एंड क्लियर वाटर इज देन कलेक्टेड इन द बीकर कैप्ड अंडर इट. क्लियर वाटर कलेक्ट हो जाता है एंड द मड रिमेन इन द फिल्टर पेपर. Okay, these are the method of removing insoluble impurities. Now the method of removing soluble impurities. Okay, even after filtration, water may contain germs that is unfit for drinking. Okay, so germs can be removed in the following ways. First, beta, boiling. We boil the water and boiling water kills the germs present in it. Okay, second method है बेटा chlorination. Chlorination is the process of adding a chemical called chlorine into the water. ठीक है, chlorination में हम क्लोरीन को ऐड करते हैं. ठीक है, and it help to kill the germs present in the water. और ये germs को kill कर देता है. And nowadays water purifier also used these days to ensure that to purify the impure water. We should always store water in clean and
covered container beta, because the contaminated container may also contaminated water as well as. Okay, so we should keep clean water in a clear containers. And remember that beta, water is very precious, and we should be conserve, we should be save water. Okay, now beta, impurities and its removal. Okay, impurities क्या है बेटा? The unwanted substance that are present in water, and impurities are of two type. Okay, they are of two types, first insoluble and then soluble. The impurities that, ये ऊपर बेटा रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पर this is soluble impurities and this is insoluble impurities. Okay, the impurities that dissolve in water are known as soluble impurities. जो impurities water में dissolve हो जाती है, that is known as, visible नहीं होती, that is known as soluble impurities. The impurities that do not dissolve in water, और जो impurities water में dissolve नहीं होती, that is known as insoluble impurities. Example, salt, alcohol. ठीक है, और इसमें example क्या है बेटा? chalk, water, sand. ठीक है, chalk and sand, these are the example of insoluble impurities. This is soluble impurities and this is insoluble impurities. Mention here. यहाँ पर आपने क्या मेंशन करना है? soluble impurities. और यहाँ पर क्या मेंशन करना है बेटा? insoluble impurities. Now both these impurities are present in water. और दोनों impurities जो हैं वो कहाँ present है? water में present होती है. So the removal of these impurities become important. तो हमें इसको remove करना, that is very important for us. Okay, now activity है बेटा, ये to identify the nature of the impurities. ये एक्टिविटी शो कर रही है कि impurities का क्या नेचर है, whether it is a soluble or insoluble. Take 2 flask. 2 फ्लास्क लिए हमने with water. ठीक है, then add a spoon of sugar. इसके अंदर शुगर डाला in the first flask. Add a spoon of pencil sharpener in the second flask. ठीक है, do this activity, try this activity at your home. एक फ्लास्क में आपने शुगर सॉल्यूशन डालना है, एक फ्लास्क में आपने पेंसिल के शार्पनिंग पील्स होते हैं वो डालने हैं. नाउ स्टर द बोथ द बीकर्स. दोनों बीकर्स को अच्छे से स्टर करना है, मिलाना है, मिक्स करना है. एंड नाउ यू विल सी व्हाट इज दिस? शुगर इज कम्प्लीटली सॉलेबल. शुगर कम्प्लीटली सॉलेबल हो जाएगा, कोई रेजिड्यू नहीं बैठे लेफ्ट होएगा. ठीक है, फिर है पेंसिल शार्पनिंग आर इंसॉलेबल इन वाटर. लेकिन जो पेंसिल शार्पनिंग है वो क्या इंसॉलेबल है वाटर में, तो रेजिड्यू लेफ्ट होगा. अगर आप उसको फिल्टर करते हो, आप उसको छानते हो, तो क्या होगा? इन शुगर सोल्यूशन नो रेजिड्यू इज देयर, बट इन पेंसिल शार्पनिंग द रेजिड्यू इज लेफ्ट. सो इट मीन्स शुगर इज दिस इज अ सॉलेबल एंड दिस इज इनसॉलेबल. ठीक है ना. नाउ सम मेथड ऑफ रिमूविंग इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज. पहला है बेटा कि हम इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट है फिल्टरेशन. द सेपरेशन ऑफ इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर. या तो फिल्टर पेपर लो या मसलिन क्लोथ्स. मसलिन क्लोथ्स क्या होता है बेटा? मलमल का क्लोथ्स. यस बेटा, या तो आप उसको मसलिन क्लोथ्स क्या होते हैं बेटा? मलमल का कपड़ा, या फिर फिल्टर पेपर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर और मसलिन क्लोथ्स यू कैन सेपरेट द इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज फिल्टरेशन. ठीक है, फिल्ट्रेट. जो क्लियर लिक्विड होगा दैट विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड इट इज नोन एज फिल्ट्रेट. और रेजिड्यू क्या होगा बेटा? जो सॉलिड इम्प्योरिटीज ऊपर लेफ्ट हो जाएगी फिल्टर पेपर पे, दैट इज रेजिड्यू. नाउ सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन. Sedimentation, you have already learned that the process of settling down of heavy impurities is known as sedimentation. इसमें आपको क्या करना है बेटा? You have to take water in a beaker. ठीक है, wait for 3 to 4 hours. The impurities will settle down at the bottom of the beaker and the clear liquid will come on the top of the liquid. ठीक है, top of the beaker. The process of settling down of heavy impurities is known as sedimentation. और जो clear liquid ऊपर आएगा that is called decantation. Impure water is allowed to stand for some time. Impure water को आपने थोड़ी देर के लिए रखना है. Impurities settle down at the bottom, that is known as a sediment. ठीक है, आफ्टर दैट द क्लीन वाटर poured out into the separate container. जो क्लियर वाटर होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, अलग कंटेनर में डाल लेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन.
So by these method we can remove insoluble impurities, filtration, sedimentation and decantation. Now the removal of soluble impurities. How we remove soluble impurities from the water? So soluble impurities are very finely mixed in the water. They are bacteria, they are salt, they are germs. So hence their removal become bit difficult. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? As you know that बेटा, we have already discussed first boiling. Boiling हमने डिस्कस किया था on a small scale पे. Boiling से by boiling water we can remove the impurities. Second, by chlorination. ठीक है, by adding chlorine tablets, by adding allium we can remove the bacteria present in the water. By evaporation. ठीक है, evaporation से हम salt जो है present जो है salt insoluble impurities में we can remove that impurities by evaporation or by distillation. Okay. Now beta, worksheet 3. Unscramble the following words to make meaningful words. Okay. AIFLTRET, that is filtrate. Okay, क्या आएगा बेटा यहाँ पर? Filtrate. तो right here. Filtrate. Now second, ESIERDU, that is residue. Residue. Okay, now second, write whether the given statement are true or false. Silk cloth is used for filtration. That is wrong. We use muslin clothes या filter paper. Okay, so this is false. Chalk does not dissolve in water. That is true. Chalk जो है वो पानी में नहीं dissolve होती. That is true. Common salt is soluble in water. That is true. Okay. Now fill in the blanks with the option given below. Chalk and sand are dash in water, whereas sugar and salt are dash in water. तो chalk and sand क्या है बेटा? Insoluble. ठीक है, and sugar and salt are soluble. Dash is left on the filter paper in case of insoluble substance. क्या left होता है? Residue. Okay. Yes बेटा, question number 4. Tick the correct option. Which process is shown in the figure above? क्या process होगा? Filtration? No. Sedimentation? No. Decantation? No. ओजोनोलाइसिस बेटा, इसके अंदर क्या होता है? ओजोनोलाइसिस प्रोसेस होता है आरओ के अंदर. दिस इज आरओ. दिस इज यूज्ड टू प्योरीफाई द प्योरिफिकेशन. दिस इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड दिस is based on ozonolysis. Now take a glass of water and drop following things into it. Check whether they float or sink. तो coin क्या करेगा बेटा? Float or sink. Coin is heavy, तो ये क्या करेगा बेटा? Sink करेगा. Pencil shaving, they are lighter, so ये float करेंगे. Cork is also light, so it is also float. Iron nail heavy है, so it is sink. So lighter substances float in water and whereas heavy substances sink in water. Okay beta. So beta, you have to read page number 84 and do the worksheet 3, that is on page number 85. Okay, thank you. Have a nice day. Bye beta.